Supreme Court judgment on basic wages for EPF contributions. In a landmark judgment, February 2019, the Supreme Court of India delivered definitive clarification on which components must be included in basic wages for calculating provident fund contributions. The court established that all allowances universally, necessarily, and ordinarily paid to all employees must be treated as part of basic wages for EPF calculations, regardless of how employers classify these payments. This precedent-setting decision significantly impacts employer compliance requirements, potentially increasing mandatory contribution amounts to the employee's provident fund. The court further specified that specialized allowances paid to workers based on their unique work requirements or specific working conditions remain excluded from the basic wages calculation. The case background: Civil Appeal Number 6221 of 2011, Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal, versus Vivekananda Vidyamandir, and others. The primary case that initiated judicial review, Civil Appeal Numbers 3965-66 of 2013, Surya Roshni Limited vs. Employees Provident Fund Organization, involving manufacturing sector implications, Civil Appeal Numbers 3969-70 of 2013, U. Flex Limited vs. Employees Provident Fund Organization, addressing packaging industry concerns, Civil Appeal Numbers 3967-68 of 2013, Montage Enterprises Pvt Limited vs. Employees Provident Fund Organization, representing small enterprise perspectives. The Supreme Court of India consolidated these appeals for joint hearing as they all centered on the pivotal question of basic wages interpretation for EPF contribution calculations. The landmark judgment, delivered on February 28, 2019, established a definitive precedent that now guides employer compliance across all industries throughout India. The legal question, core issue: whether special allowances paid by establishments constitute basic wages under Section 2B2, read with Section 6 of the Employees Provident Fund Act for the purpose of calculating contribution amounts. Statutory framework. Section 2B defines the scope of basic wages, while Section 6 establishes the methodology and obligations for contributions to the Employees Provident Fund. Legislative intent. The EPF Act serves as crucial social welfare legislation enacted specifically to safeguard employees' financial security and protect their long-term interests. Definition of basic wages is precisely defined under Section 2B of the EPF Act. Included in basic wages all emoluments earned by an employee while on duty or on leave with wages in accordance with the terms of the contract of employment. Specifically excluded from basic wages: cash value of food concessions provided by the employer, dearness allowance, adjustments for inflation and cost of living, house rent allowance, accommodation benefits, overtime allowance, payment for work beyond standard hours, bonus and commission payments, performance-based incentives, any presents or gifts made by the employer. The test of universality for payments to be classified as basic wages for EPF contribution purposes. They must fulfill these critical criteria: universal application. Payments must be uniformly extended to all employees across the organization, without discrimination or exception. Fundamental nature. Payments must constitute an essential, recurring, and inherent component of the standard compensation structure. Mandatory inclusion. When both criteria above are conclusively satisfied, such payments are required by law to be incorporated into the calculation base for EPF contributions. What's excluded from basic wage? The following payments are specifically excluded from EPF contribution calculations: performance-based earnings, payments that vary among employees based on individual efficiency, productivity, and work quality; not universally applicable production incentives, special allowances tied directly to output targets or performance metrics that aren't uniformly provided; conditional payments, compensation available only to employees meeting specific criteria or utilizing particular opportunities, failing the universality test. The court's findings: insufficient documentation. Establishments failed to provide compelling evidence that allowances were genuinely variable or performance-based in nature. Deliberate misclassification. Authorities concluded that these payments were intentionally disguised as separate allowances to evade inclusion in basic wage calculations. Judicial affirmation. After comprehensive review of the evidence presented, the Supreme Court fully endorsed the determination made by the regulatory authorities. Final judgment: appeal fully granted. The Supreme Court completely upheld Civil Appeal Number 6221 of 2011 filed by the Regional Provident Fund Commissioner, validating their enforcement actions. Unanimous rejection of opposition.
all counter appeals by the establishments were decisively dismissed, confirming their liability for proper provident fund contributions. Legal watershed moment. This February 28, 2019 judgment created a definitive precedent in Indian labor law, fundamentally reshaping how provident fund contributions must be calculated nationwide. आज हम एक काफी अहम मौजू पर बात कर रहे हैं। ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ के हवाले से बुनियादी उजरत की तारीफ का मामला है। जी बिल्कुल। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले हैं, ईपीएफओ के सर्कुलर्स भी हैं और कुछ तज्जियाती नोट्स। तो मकसद ये है कि जरा गहराई में जाकर समझें कि भाई ये प्रोविडेंट फंड कटता किस चीज पर है, यानी कौन सी तनख्वाह बुनियादी मानी जाती है। बिल्कुल। और ये खास तौर पर देखें 28 फरवरी 2019 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया ना, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बमुकाबला विवेकानंद विद्यामंदिर वाला केस। अच्छा, हाँ, वो मशहूर केस। जी वो, और उसके साथ जो दूसरी अपीलें थीं, उसने मतलब एक तरह से पूरे मुल्क में आजरों और मुलाजमीन के लिए पीएफ कैलकुलेशन का तरीका ही बदल दिया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, एक बुनियादी उसूल तय हो गया। ठीक है, तो आइए जरा इसकी जड़ तक चलते हैं। ये मसला आखिर था क्या, मतलब अदालत तक जाने की नौबत क्यों आई? देखें, असल में मसला ये था कि ईपीएफ एक्ट है ना 1952 का, हाँ, उसकी दफा 2B में बुनियादी उजरत की तारीफ तो लिखी है, लेकिन उस पर बड़ा कंफ्यूजन था कि कंपनियां जो मुख्तलिफ अलाउंस देती हैं, जैसे वो स्पेशल अलाउंस वगैरह, हाँ, स्पेशल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, पता नहीं क्या क्या। तो सवाल ये था कि क्या ये सब बुनियादी उजरत में शामिल हैं या नहीं। अब चूंकि पीएफ तो कटता है बुनियादी उजरत पर, तो ये जानना बहुत जरूरी था कि कौन सा अलाउंस उसमें आएगा और कौन सा नहीं। बिल्कुल। कई कंपनियां क्या कर रही थी कि वो तनख्वाह का बड़ा हिस्सा उन अलाउंसेस में दिखाकर बुनियादी उजरत कम रखती थी ताकि पीएफ कम देना पड़े। अच्छा, तो ये चालाकी चल रही थी एक तरह से। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस गुत्थी को कैसे सुलझाया, ये दिलचस्प बात है। अदालत ने एक बहुत अहम उसूल वाजे किया। वो कहते हैं ना, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, यानी कागज पर क्या लिखा है, नाम क्या दिया है, वो छोड़ें, असल में वो अदायगी है क्या, मतलब असल नियत क्या है उस पैसे की। फैसले में साफ कहा गया कि वो सारे अलाउंस जो मुलाजमीन को, आप यूँ समझे, आलमगीर तौर पर, मतलब सबको, यूनिवर्सली, हाँ, यूनिवर्सली और लाजमी तौर पर यानी नेसेसरीली और आम तौर पर यानी ऑर्डिनरीली मिलते हैं, वो सब बुनियादी उजरत का ही हिस्सा हैं। मकसद बिल्कुल साफ था कि भाई कंपनियां तनख्वाह को मसनूई तौर पर तोड़कर अपनी पीएफ की जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। वाह, तो अगर किसी चीज का नाम अलाउंस रख दिया लेकिन वो मिल सबको रहा है और हर महीने मिल रहा है, तो वो बुनियादी उजरत ही है। बिल्कुल सही समझे आप। किलीदी टेस्ट, जिसे हम यूनिवर्सैलिटी टेस्ट कह सकते हैं, वो यही है। क्या ये पैसा सबको या तकरीबन सबको मिल रहा है बगैर किसी खास वजह या शर्त के, यानी किसी की अच्छी कारकर्दगी या ज्यादा काम की वजह से ना हो। जी, अगर जवाब हाँ में है और ये कोई इजाफी काम या ओवरटाइम वगैरह के बदले नहीं है, तो बहुत ज्यादा इम्कान है कि ये बुनियादी उजरत ही है। लेकिन क्या इसमें से कुछ चीजें बाहर भी हैं, मतलब मुस्तस्नियात? एचआरए का बहुत जिक्र होता है। हाँ, बिल्कुल है। एक्ट खुद कुछ चीजें वाजे तौर पर निकालता है, जैसे आपने कहा हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए, वो दफा 2B2 के तहत साफ साफ बाहर है। अच्छा, इसी तरह ओवरटाइम का पैसा, कोई बोनस मिला, कमीशन मिला या कोई भी ऐसी अदायगी जो किसी खास कारकर्दगी या पैदावार से जुड़ी हो, वो भी बुनियादी उजरत में नहीं आती। तो अहम बात यह है कि वो रकम मुतगय्यर ना हो, मतलब बदलती ना हो और किसी खास वजह से न मिल रही हो। बिल्कुल। अगर कोई अलाउंस बस तनख्वाह का एक पक्का हिस्सा है जो सभी को मिलता है, तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बुनियादी उजरत है। एक मिसाल थी ज़राए में, किसी कंपनी ने डिसिप्लिन अलाउंस नाम रखा था, लेकिन वो सबको फिक्स्ड मिलता था। तो अदालत ने कहा नाम जो भी हो, ये है बुनियादी उजरत। जी बिल्कुल। ये तो काफी वाज़ेह हो गया। अच्छा, अब आते हैं अमली पहलू पर। इस फैसले का कंपनियों पर यानी आजरों पर और मुलाजिमीन पर, इन दोनों पर क्या असर पड़ा? जाहिर है अलग अलग पड़ा होगा। हाँ, यकीनन। कंपनियों के लिए, खास तौर पर वो जो पहले इन अलाउंसेस को पीएफ से बाहर रखती थीं, उनके लिए तो ये एक बड़ा माली बोझ बन गया। पीएफ की शराकत बढ़ गई। और सिर्फ आगे के लिए नहीं, शायद पिछला भी देना पड़ा हो। बिल्कुल। ये भी मुमकिन था कि उन्हें पिछले कई सालों का हिसाब दोबारा करना पड़े और फिर इस पर सूद और जुर्माने अलग। तो बहुत सी कंपनियों को अपना पूरा कॉम्पेंसेशन स्ट्रक्चर यानी तनख्वाह का ढांचा बदलना पड़ा। एचआर और फाइनेंस वालों के लिए तो ये सर दर्द था। समझ गया। और मुलाजमीन के लिए
उनके जाविये से क्या तस्वीर बनी? मुलाजमीन के लिए देखें थोड़ी मिली-जुली सूरत हाल थी। एक तरफ तो ये हुआ कि चूंकि अब ज्यादा रकम पर पीएफ कटने लगा तो उनकी माहाना हाथ में आने वाली तनख्वाह यानी टेक होम सैलरी वो थोड़ी कम हो गई। अच्छा, क्योंकि पीएफ में ज्यादा कट गया। जी, लेकिन दूसरी तरफ जो ज्यादा अहम बात है, उनके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में पैसा ज्यादा जमा होने लगा। न सिर्फ उनका अपना हिस्सा बढ़ा बल्कि कंपनी का जो बराबर का हिस्सा होता है वो भी बढ़ गया। तो लंबे अरसे में तो ये फायदे की बात है, रिटायरमेंट के लिए ज्यादा पैसा। बिल्कुल, ये उनकी रिटायरमेंट सिक्योरिटी के लिए बहुत बेहतर है। तो अगर हम इस सबको समेटें तो ये फैसला सिर्फ कोई कानूनी या तकनीकी वजाहत नहीं थी, इसके समाजी असरात भी हैं। यकीनन ये सिर्फ तकनीकी नुक्ता नहीं था, ये फैसला असल में ईपीएफ एक्ट की जो रूह है ना कि ये एक समाजी बहबूद का कानून है, उसको बरकरार रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात वाजे की कि ऐसे कानूनों की तशरीह हमेशा कारकुनों के हक में होनी चाहिए। सही। ये कंपनियों के लिए भी एक पैगाम था कि भाई तनख्वाह के मामले में शफाफियत लाएं और अपनी कानूनी जिम्मेदारियां ठीक से पूरी करें, और ये भी कि मुसलसल देखते रहें कि आप कवानीन की पाबंदी कर रहे हैं या नहीं। बिल्कुल, ये तो लाखों कारकुनों की समाजी तहफ्फुज को एक तरह से मजबूत करने वाला कदम है। अच्छा, चलते चलते एक आखिरी ख्याल जहन में आ रहा है जी। अब जैसे काम का तरीका बदल रहा है, गिग इकोनॉमी है, लोग घर से काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है ये फैसला मुस्तकबिल में तनख्वाह के नए मॉडल्स और दूसरे समाजी तहफ्फुज के कवानीन की तशरीह पर कैसे असर डालेगा? ये एक गौर तलब सवाल है ना? यकीनन ये एक बहुत अहम सवाल है और वक्त के साथ ही इसकी मजीद वजाहत होगी। नमस्ते, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी स्रोत पर बात करने वाले हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है 28 फरवरी 2019 का, और इसने भविष्य निधि मतलब पीएफ कंट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन को काफी हद तक बदल दिया है। जानकारी यही है कि इस फैसले ने जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 है उसकी धारा 2B में मूल वेतन या बेसिक वेजेस की परिभाषा पर जो अलग अलग विचार थे उन्हें स्पष्ट किया है। हाँ, मतलब हाई कोर्ट्स में अलग अलग व्याख्याएं चल रही थी, तो ये फैसला उन सबको सुलझाता है। तो आज का मकसद है इस फैसले के मुख्य पॉइंट समझना, कोर्ट का तर्क क्या था, और हाँ, सबसे जरूरी कि एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज पर इसका क्या असर पड़ा है या पड़ सकता है। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल क्या था? यही कि कंपनियां जो अलग अलग अलाउंस देती हैं, जैसे स्पेशल अलाउंस, क्या वो पीएफ कैलकुलेशन के लिए मूल वेतन माने जाएं? हाँ बिल्कुल, यही मुख्य मुद्दा था। और कई सारे मामले थे, जैसे विवेकानंद विद्यामंदिर का केस था, सूर्या रोशनी लिमिटेड का। कोर्ट ने इन सबको एक साथ सुना। जी हाँ। और ये सीधा जुड़ा था एक्ट की धारा 2B से। ये धारा बताती है कि मूल वेतन है क्या, मतलब वो सारा पैसा जो कर्मचारी अपनी ड्यूटी करते हुए कमाता है। लेकिन इसमें कुछ चीजें शामिल नहीं है ना? बिल्कुल, एक्ट में ही साफ लिखा है कि कुछ चीजें बाहर हैं, जैसे ओवरटाइम भत्ता, बोनस हो गया, कमीशन, और हाँ, मकान किराया भत्ता यानी HRA, वो इस फैसले के बाद भी बाहर ही है, उसे मूल वेतन में नहीं गिना जाता। अच्छा, यहीं पर बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। कोर्ट ने 2 सिद्धांत दिए, एक सार्वभौमिकता का सिद्धांत, यूनिवर्सैलिटी प्रिंसिपल, और दूसरा पदार्थ पर रूप का सिद्धांत, सब्सटेंस ऑफ अ फॉर्म डॉक्ट्रिन। हाँ, मतलब कि अगर कोई अलाउंस है जो सभी कर्मचारियों को मिल रहा है या किसी एक कैटेगरी के सभी कर्मचारियों को, बिल्कुल नियमित रूप से, हाँ नियमित रूप से, बिना किसी खास परफॉर्मेंस शर्त के, तो वो मूल वेतन ही माना जाएगा। सही पकड़ा आपने। चाहे कंपनी ने उसे कागज पर नाम कुछ भी दिया हो, स्पेशल अलाउंस, फलाना अलाउंस, डिमका अलाउंस, इससे फर्क नहीं पड़ता। राइट। असल चीज देखी जाएगी, है ना, कि वो है क्या। बिल्कुल। कोर्ट ने इसी को परखने के लिए एक, आप कह सकती हैं, दोहरी कसौटी या डबल टेस्ट दिया। पहला, क्या पेमेंट सभी को या उस कैटेगरी के सभी को मिल रहा है यूनिवर्सली, और दूसरा, क्या वो रोजगार की शर्तों के तहत रेगुलरली मिलना तय है। अच्छा, अगर दोनों का जवाब हाँ है तो वो भत्ता मूल वेतन का हिस्सा है, सीधा हिसाब। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे अलाउंस जिनको शायद पहले कंपनियां ये सोचकर बाहर रखती थी कि नाम तो स्पेशल है, हाँ, या मैनेजमेंट अलाउंस है, या शायद कन्वेंस अलाउंस, वो अब पीएफ के दायरे में आ सकते हैं अगर वो सबको मिल रहे हैं बिना किसी लिंकेज के। बिल्कुल, यही बात है। भुगतान का असली चरित्र
उसका सब्सटेंस देखा जाएगा, हाँ। न कि उसका फॉर्म या लेबल। हाँ, अगर कोई अलाउंस सच में वेरिएबल है, मतलब किसी के प्रदर्शन से जुड़ा है या फिर एक्ट ने खुद ही उसे बाहर रखा है, जैसे HRA, तो वो बाहर रहेगा। कोर्ट ने इस पर पुराने फैसलों को भी देखा, जैसे ब्रिज एंड रूफ कंपनी का मामला था। अच्छा, उसमें भी कुछ ऐसी बात थी? हाँ, उसमें भी ये सार्वभौमिकता वाली बात पहले उठी थी। तो ये कोई एकदम नई बात नहीं है, पर इस फैसले ने इसे बहुत स्पष्ट कर दिया। तो फिर नियोक्ताओं के लिए, मतलब कंपनियों के लिए तो इसका असर बड़ा होगा। जी, काफी बड़ा। उन्हें अपने पीएफ कंट्रीब्यूशन की गणना दोबारा करनी पड़ सकती है। हाँ, रिकैलकुलेशन करना होगा। और हो सकता है पिछले समय के लिए भी। पिछले समय के लिए भी, यानी रेट्रोस्पेक्टिव। हाँ, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि ये कानून की व्याख्या है, कोई नया कानून नहीं, तो पिछली देनदारी भी बन सकती है। ओ, तो फिर ब्याज और पेनल्टी का भी मामला बन सकता है। संभव है। ये एम्प्लॉयर्स के लिए एक बड़ी बात है, उन्हें अपनी सैलरी स्ट्रक्चर को भी शायद रिव्यू करना पड़े। ये तो है। अब कर्मचारियों के नजरिए से देखें तो उनके लिए लॉन्ग टर्म में ये फायदेमंद है, बेहतर रिटायरमेंट सुरक्षा। हाँ, क्योंकि पीएफ में ज्यादा पैसा जमा होगा। बिल्कुल, कुछ अनुमान तो ये भी कहते हैं कि रिटायरमेंट बचत 20 से 30% तक बढ़ सकती है। अच्छा, ये तो काफी बड़ा आंकड़ा है। हाँ, पर इसका एक दूसरा पहलू भी है। वो क्या? कि हर महीने जो हाथ में सैलरी आती है, टेक होम सैलरी, हाँ। वो थोड़ी कम हो सकती है। हाँ, क्योंकि पीएफ का डिडक्शन बढ़ जाएगा। सही, लेकिन अगर हम बड़े उद्देश्य को देखें तो ईपीएफ एक्ट का मकसद ही सामाजिक सुरक्षा देना है, कर्मचारियों का हित देखना है। तो ये फैसला उस मकसद को और मजबूत करता है। बिल्कुल, कानून की व्याख्या कर्मचारियों के हित में होनी चाहिए, ऐसा माना जाता है। और ये बात की है पिछली तारीख से लागू हो सकता है, ये नियोक्ताओं के लिए ध्यान रखने वाली बात है। उन्हें इसके लिए तैयार रहना होगा। जी हाँ, अनुपालन, कंप्लायंस एक महत्वपूर्ण पहलू बन गया है। तो सार यही निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया, भत्ते का नाम कुछ भी हो, अगर वो सभी कर्मचारियों को नियमित रूप से बिना किसी खास शर्त के मिल रहा है तो वो मूल वेतन का हिस्सा है। पीएफ उस पर कटेगा। हाँ। सिवाय उन चीजों के जो एक्ट में साफ बाहर हैं, जैसे HRA। बिल्कुल, HRS स्पष्ट अपवाद है। नियोक्ताओं को अब ये सुनिश्चित करना होगा कि वो इसके हिसाब से चल रहे हैं। और यहाँ एक और सवाल दिमाग में आता है सोचने के लिए। क्या? कि ये जो सिद्धांत है पदार्थ पर रूप वाला, यानी भुगतान के असली चरित्र को देखने का नजरिया, हाँ। क्या ये भविष्य में दूसरे कर्मचारी लाभों जैसे ग्रेच्युटी है या बोनस है, इनकी गणना को भी प्रभावित कर सकता है? अच्छा। भले ही वो अलग कानूनों के तहत आते हो। हाँ। ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर शायद आगे और चर्चा हो सकती है या कोई नया मामला सामने आ सकता है। इस पर विचार किया जा सकता है। सत श्री अकाल, आज ਆਪਾਂ एक बहुत अहम मुद्दे ते गल कर रहे हैं। सत श्री अकाल। हाँ जी, ये सुप्रीम कोर्ट ਦਾ 28 फरवरी 2019 वाला फैसला है ना, ईपीएफ बारे। बिल्कुल, इस फैसले ने ना कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਜੋ परिभाषा ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। हाँ जी, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮਤਲਬ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇਹ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੀ। ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੇ। हाँ बिल्कुल, मतलब मुख्य नुक्ते की ने, क्यों ये फैसला आया ते असर की होया। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਤੋਂ। ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀ? देखो, मुख्य सवाल ये सी कि कंपनियां जेड़े वख-वख भत्ते दिंदियां ने, खास करके विशेष भत्ता या स्पेशल अलाउंस, ਹਾਂਜੀ। कि वो ईपीएफ एक्ट 1952 ਦੀ ਤਾਰਾ 2B ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਪੀਐਫ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੇਜ ਫਸਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਰਾ 2B ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ? ਕੀ ਬਾਹਰ ਸੀ ਇਸ ਚੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਤਾਰਾ 2B ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜੋ ਕੰਮ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਕਦ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੇ ਉਸ ਦੀ ਨਕਦ ਕੀਮਤ, ਹਾਂ, ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਪੱਤਾ, HRA ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂ, ਓਵਰਟਾਈਮ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਬੋਨਸ, ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਭ ਬਾਹਰ ਸੀ। HRA ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੀ ਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, HRA ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਪੱਤੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤੇ ਕਿਉਂ ਰੌਲੇ 'ਚ ਆ ਗਏ? ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ? ਹੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਲਾਉਂਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਈਪੀਐਫ ਘੱਟ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ,
ਤਾਂ ਕਿ ਯੋਗਦਾਨ ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਲਗਾਇਆ, ਸਬਸਟੈਂਸ ਓਵਰ ਫਾਰਮ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਨਿਯਮਿਤ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਵਰਸੈਲਿਟੀ। ਹਾਂ, ਸਰਵਵਿਆਪਕਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਦੋਹਰਾ ਟੈਸਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ। ਦੂਜਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੱਕਾ ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਸ ਨਾਂ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਪੱਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਾਫੀ ਆਮ ਪੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਲਾਉਂਸ, ਕਨਵੇਂਸ ਅਲਾਉਂਸ, ਸਫਰ ਖਰਚਾ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਲਾਉਂਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਲਾਉਂਸ ਵੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ? ਹਾਂ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿ ਅਸਲ ਖਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਸਿਕ ਵੇਜਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਈਪੀਐਫ ਲਈ। ਵਾਹ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਇਸ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਪੀਐਫ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਗਿਣ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਈਪੀਐਫ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਰੈਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵ? ਹਾਂ, ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਓਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸੈਲਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਮਾਣੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ? ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧ ਰਕਮ ਤੇ ਈਪੀਐਫ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਤੋਂ 30% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਈਪੀਐਫ ਬਚਤ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ, ਟੇਕ ਹੋਮ ਪੇ, ਉਹ ਘਟ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਥੋੜੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ, ਬੁਢਾਪੇ ਲਈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਈਪੀਐਫ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਵੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਈਪੀਐਫ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਤੇ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਜਾਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਹੀ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੱਤੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਐਚਆਰਏ। ਹਾਂ, ਐਚਆਰਏ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖਰਚੇ ਦੀ ਅਸਲ ਭਰਪਾਈ ਹੈ, ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੈਸਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਨਿਯਮਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਈਪੀਐਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਧਾਂਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਐਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਈਐਸਆਈ ਐਕਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਕਾਫੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ, ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਈਪੀਐਫ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Welcome to this deep dive. We're here to unpack the materials you've sent over.
focusing today on a really critical legal clarification in India. That's right. We're diving into a landmark 2019 Supreme Court judgment. Yeah, and our goal is to really get under the hood of this decision, understand exactly what it means. It's all about how basic wages get defined for the Employees Provident Fund, the EPF. Yeah. This ruling, well, it changed the landscape quite a bit. Definitely. We've got your notes, official PDFs on the judgment, EPFO reactions. We're going to sift through it all and pull out the core essentials. And explain why it matters, whether you're an employee trying to figure out your retirement savings, or maybe you're running a business and need clarity on compliance. Exactly. We want to cut through the legal jargon for you. Make it make sense. Okay, so let's jump right in. What was the absolute heart of the matter? What question was the Supreme Court actually trying to answer here? The fundamental legal question was this: do these special allowances that many employers pay out, do they count as basic wages when you're calculating EPF contributions? Ah, right, because the amount you contribute is tied directly to that basic wage figure. Precisely. And the legal basis for this is Section 2B2 read together with Section 6 of the EPF Act, the 1952 Act. And why did this need the Supreme Court? Was it just unclear before? Well, yeah, it was more than unclear. You had different high courts across India interpreting basic wages in conflicting ways. It created a lot of confusion, inconsistency. So employers in one state might be doing things differently than in another. Exactly. So the Supreme Court needed to step in, resolve these contradictions, and basically set a single, clear standard for the whole country. Makes sense. So what was the guiding principle they landed on? What's the core idea behind their ruling? The cornerstone is what they called the universality principle. Universality. Yeah. Put simply, the court said if an allowance is paid universally, meaning to all employees, or maybe all employees in a specific category, and it's paid necessarily and ordinarily as part of the job, then it has to be treated as part of basic wages. Regardless of what the payslip calls it. Exactly. It doesn't matter if the employer labels it a special allowance or something else. Okay, so they were really looking past the labels. Very much so. This ties into another key concept the court endorsed: substance over form. Substance over form, meaning what it actually is matters more than the name. Precisely. The court looked at the true nature of the payment. The idea is that employers can't just artificially split up someone's core salary into lots of different allowances as a way to, reduce their EPF obligations. What the payment truly represents is key. Okay, that's a big shift. So how do you actually apply this? How do you figure out if an allowance is part of basic wages now? Is there a test? Yes, the court essentially laid out a double test, or maybe you could call it a two-pronged analysis. Okay, what's the first prong? First is the universality test. Simple question. Is this payment being made universally to all employees, or at least everyone within a defined group, without significant exceptions? Got it. Universal payout. What's the second part? The second is the regularity test. Is this payment something that's regularly and ordinarily paid under the terms of employment? Is it a standard part of the compensation package, or is it more like a one-off payment or something contingent on, say, specific unusual events? So both universality and regularity generally need to be true. That's the general idea, yes. For an allowance to be pulled into basic wages, it usually needs to satisfy both these conditions. Were there other criteria mentioned in the materials? Yes. The sources also mention a couple of other related ideas. There's a necessity test, like, is the payment inherently required for the job? And crucially, the variability test. Variability. How does that work? This is important. If an allowance genuinely varies based on individual factors, maybe extra effort, specific performance metrics, or the particular duties someone performs, then it might still be excluded from basic wages. The variability has to be real, though, not just cosmetic. That helps clarify. So applying these tests, can you give some examples of allowances that are now more likely to be included in basic wages? Sure. If they're paid uniformly, without being linked to, say, individual performance, then several common allowances likely fall under basic wages now. Things like a fixed canteen allowance. If it's a set amount for everyone, not based on what they actually eat. Exactly. Or a special allowance, if it's just a standard payment to everyone. Management allowance, if applied uniformly. City compensatory allowance, if everyone in that location gets it. A fixed conveyance allowance, not reimbursement for actual travel, but a set amount. Same for a fixed medical allowance. A standard amount, not a true reimbursement for bills. Right. Unless it's genuinely reimbursing an expense. Okay.
And what about the other side? What allowances are still likely to be excluded? I know HRA is often treated separately. You're absolutely right. House rent allowance, HRA, is explicitly excluded by the Act itself in Section 2B. That hasn't changed. And as we touched on with the variability test, payments that are genuinely variable. Based on performance or maybe overtime. Yes. Or tied to specific contingent circumstances, or payments that are actual reimbursements for expenses incurred, those are generally still likely to fall outside the definition of basic wages. It really does sound like the court was aiming to close potential loopholes. I think that's fair to say, where maybe core parts of salary were being labeled as allowances to, well, lower the EPF contribution amount. And you mentioned the EPF Act itself is social welfare legislation. Yes, the sources emphasize that. It's fundamentally about ensuring employees have some financial security, especially post-retirement. The court highlighted this, suggesting the act should be interpreted broadly in a way that favors the employees it's designed to protect. Now, this wasn't just one single case that led to this big judgment, was it? You said the court consolidated several appeals. That's right. They brought together multiple civil appeals, all grappling with this same core issue, interpreting basic wages. What was the main case, the one that sort of kicked things off? The primary one cited is Civil Appeal, Commercial 6021 of 2011. It was the Regional Provident Fund Commissioner to West Bengal versus Vivekananda Vidyamandir and others. Vivekananda Vidyamandir, that's a school. Yes, it involved a school and a special allowance they were paying. It had a bit of a complex history in the lower courts. The High Court initially ruled for the school, then a division bench reversed that. But that reversal got recalled because the school apparently wasn't properly represented. Wow, okay. And then a new bench dismissed the appeal anyway. It was that dismissal the school then challenged in the Supreme Court. So that school's special allowance was kind of the lead case. What were some of the others bundled with it? What kinds of allowances were involved there? There were several others mentioned in the materials. One was Surya Roshni Ltd. Versus Employees Provident Fund. That was civil appealness. 396566 of 2013. They're a manufacturing company. And their allowances. The dispute there covered a whole list. Conveyance, education, food concession, medical, even special holidays allowance. The High Court had actually allowed them to exclude a lunch incentive, but the rest were in question. Okay, another one. Then there was Uflex Ltd. Versus Employees Provident Fund Civil Appeal Num 396970 of 2013, a packaging company. What were their disputed allowances? For Uflex, the focus was on their house rent allowance and special allowances. In their case, the High Court had dismissed the company's petition, siding with the EPFO. So the EPFO was winning some in the High Courts already. Were there more? Yes. Also, Montage Enterprises PVT Ltd. Versus Employees Provident Fund Civil Appeal Nums 396768 of 2013. Another case where a company was challenging the inclusion of various allowances, and the High Court had ruled against them. Okay. And finally, the management of St. Gobain Glass India Ltd. Versus a Regional Provident Fund Commissioner. This was actually a transfer case, number 19 of 2019. Transferred directly to the Supreme Court. Yeah, which usually signals that the legal questions involved were considered particularly significant or complex, even if the specific allowances aren't detailed in our sources for that one. Across all these cases, what was the EPFO's main line of argument? What were they telling the court? The Additional Solicitor General, arguing for the EPFO, had a few key points. A big one was that many of these so-called special allowances were effectively just dearness allowances in disguise. Payments to cover cost of living increases, basically. Exactly, but labeled differently, potentially to avoid EPF. They also kept stressing that the EPF Act is beneficial legislation for workers and needs a broad, liberal interpretation. And they argued that if you want to exclude something as an incentive, there needs to be a really clear, direct link, a nexus between that payment and some measurable extra output or specific performance by the employee. Okay, and the employers, the companies on the other side, what were their counter-arguments? Well, they raised several points. A major concern was the potential financial burden, especially if this ruling was applied retrospectively. Imagine having to suddenly pay years of back contributions, plus interest and penalties. Yeah, that would be significant. They also talked about the historical context, how compensation structures have evolved in India, arguing these allowances had traditionally been treated separately. Some even brought up legal interpretations from other countries. Any specific legal doctrines they relied on? Yes, they tried to use a principle called adjustum generis,
They argued that when the Act lists specific exclusions and then says other allowances, that other allowances should only mean things very similar to the ones explicitly listed. They were essentially arguing that special allowances were different enough not to be covered by that general exclusion language. But the Supreme Court didn't buy that argument in these cases. No, ultimately they didn't. The court's finding, based on our sources, was that these particular employers hadn't successfully shown that the allowances they were paying were truly linked to anything other than just standard employment. They couldn't demonstrate specific eligibility criteria or genuine variability separate from the basic job requirements. So the court concluded they were, in substance, part of the basic wage. Effectively, yes. Disguised basic wages, you might say. Wow. Okay, so this ruling lands. It must have sent ripples everywhere. Who exactly felt the impact? Oh, the impact was massive. We're talking millions of employers, tens of millions of employees right across India, every sector. It's hard to overstate how widespread the effects were. Let's break that down. For employers, what were the immediate practical implications? What did they suddenly have to deal with? For employers, it was a pretty big deal. First, the obvious one, recalculating PF contributions. They had to look at all those universal allowances they might have been excluding and start including them. And potentially going back in time. That was the big fear, yes. Potential retrospective liability for past underpayments, which could mean not just the principal amount, but also hefty interest and statutory penalties. It's a huge financial risk. So, immediate financial implications. What else? They also had to fundamentally rethink their compensation structures going forward. How do you design pay packages now to be compliant? What can you legitimately call an allowance versus basic wage? So what were the recommended actions for them? The advice generally was, conduct thorough internal audits of your payroll right away, assess your potential past liability, carefully document why any allowance is excluded, show the variability, show the specific criteria, be prepared to genuinely restructure pay if needed, not just relabel things. Get legal advice, presumably. Absolutely. Seek expert legal guidance, and frankly, be prepared for more scrutiny from EPFO inspectors. They were definitely going to be looking at this. Okay, that's a lot for employers. Now, flip side, what about the employees? How did this affect them? Was it entirely good news? For employees, it's mostly positive in the long run. The main benefit is enhanced retirement security. Because PF contributions are now calculated on potentially a larger slice of their overall pay, their retirement nest egg should grow bigger. Significantly bigger. Potentially, yes. Some estimates mentioned in the material suggested the base for PF could increase by 20-30% for some employees, which translates to much larger savings over a career. But is there a downside? Like less money now? There could be a small dip in monthly take-home pay, yes. Because if the basic wage component goes up, the employee's own PF contribution also goes up, meaning a slightly larger deduction from their salary each month. But the trade-off is a bigger retirement fund later. Exactly. That's the idea. Plus, there was the potential for some employees to receive arrears, back payments, if their employers were found to have underpaid in the past and made corrective payments. Does this judgment ripple beyond just EPF? Does it affect how we think about wages for other things, like bonuses or gratuity? That's a really important point. While the ruling is specifically about the EPF Act, the principles it lays down, especially universality and substance over form, definitely set a strong precedent. It could very well influence how wages or basic wages are interpreted under other related laws. Like the laws governing bonuses or gratuity payments. Yes, or even contributions to the employee's state insurance ESI scheme. Those laws often have similar, though not identical, definitions. So this ruling could have a knock-on effect. Any chance of laws changing because of this? It's always possible. We might see legislative amendments to clarify things further, or perhaps more court cases refining the interpretation based on specific industry practices or new allowance structures. The sources even hinted at specific industry impacts. Oh yeah, Well, for manufacturing, maybe allowances linked to general production levels, if paid universally, might now be included, raising costs. For banking and finance, they often have numerous standard allowances that needed reassessment. Education, retail, hospitality, even startups, they all have common pay structures that likely needed review under this new lens. So for instance, a bank paying a standard special allowance to all its tellers would likely have to include that in basic wages now. Precisely. Unless they could demonstrate it met one of the exclusion criteria, like genuine variability tied to performance, which might be harder for some standard allowances. Okay, let's try and distill this down. If our listener takes away just a couple of key things from this whole discussion, what should they be? I think the absolute core message is this.
Universality, necessity, and regularity are now the key defining factors for basic wages under the EPF Act. If an allowance hits those marks, it's likely in. Substance over form is paramount. So for employers listening, Prioritize a really careful, honest review of your salary structures against these principles. Document everything clearly. and for employees, Take a closer look at your own payslip components with this understanding. See how your allowances stack up against these tests. and communication is key, I imagine. Definitely. Transparent communication between employers and employees about these changes is crucial. And remember, there are resources, EPFO circulars, professional advisors to help navigate the details. This has been incredibly insightful. It's clear this 2019 Supreme Court judgment wasn't just some minor tweak. It was a fundamental clarification with really far-reaching consequences for how work is compensated and how retirement savings are built in India. Absolutely, a truly landmark decision. We really hope this deep dive has given you, our listener, a solid, comprehensive grasp of this crucial ruling and its implications, going beyond just the headlines. And maybe it leaves you thinking. Considering this significant redefinition of basic wages, how might this reshape compensation strategies and social security frameworks in India down the road? Right. What further questions does this raise for you about your own financial well-being or perhaps your organization's compliance journey? Definitely something to ponder and perhaps explore further.